Class 6th Science, Chapter 4, and the chapter name is Sorting Materials into Groups. As per the introduction that this chapter contains object around us, we have to understand which are the object we have in the surroundings, the properties of materials we have to see. So what are the properties of materials? So we have to understand their appearance, hardness of the materials, whether the material is soluble or insoluble, whether that material or objects may float or sink in water, whether that object or material is transparent, means transparency, translucent, and opaque. So these are the properties we have to understand of the material, and whatever the object around us, we have to understand how to categorize and grouping. Let us see let us start the chapter. We have seen that our food and clothes have so much of variety in them. So in the earlier chapter we have seen in our India there is a variety of foods, variety of cloths. In the similar way we have a variety of objects. This chapter wants to say similarly we have a variety of objects. Not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere. We see around us a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, books, cloths, toys, water, stones, and many other objects. Means we have a lots of objects around us, variety of objects. All these objects have a different shapes, colors, and uses. In the figure you can see there are so many objects. Everyone has a different shapes, and then colors are different, and their uses are also different. मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके शेप अलग हैं, उनके कलर अलग होते होंगे, और साथ में उनके यूजेस भी ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग होते हैं. We have to look around and identify objects that are round in shape. Our list may include a rubber ball, a football, and a glass marble. तो यदि हम अपने चारों तरफ देखें कि राउंड शेप में क्या है, विच आर इन द राउंड शेप ऑब्जेक्ट्स, तो फुटबॉल हो सकता है, रबर बॉल है, मार्बल है, क्रिकेट बॉल है, डिफरेंट विच आर आई सेड दैट राउंड शेप. तो राउंड शेप आर लाइक ग्लोब इज अ राउंड शेप, and there are some not completely round but near to round are like we can say oranges, apple. So we have some kind of round shape grouping, that these are round shapes objects, they are nearly a round shape. Like you can say if we include objects that are nearly round, not completely round, our list could also include objects like apples, oranges, earthen pitcher. Earthen pitcher means ghada. So all are not completely round but near to round. Suppose we were looking for objects that are edible. So we have to also make in a group. Okay, these are the edible objects and we have to utilize for eating it. तो हमें हमेशा कैटेगराइजेशन ग्रुपिंग करना होता है फॉर आवर कन्वीनियंस, फॉर इट्स बेटर यूज़ कि हम ये ऑब्जेक्ट को किसी किसी कैटेगरी में रखें, किसी ग्रुप में रखें, सो दैट we can conveniently use it and for our any kind of aspects ये हमारे लिए convenience पे करेगा. Suppose मुझे फर्नीचर लेना है, तो फर्नीचर इज मेड अप ऑफ वुड. तो वुड के कैटेगरीज में हमारे फर्नीचर हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ व्हाट. घर में आप देखोगे देयर इज एन वार्डरोब है, अलमीरा है, यस योर टेबल है, डेस्क है, सो मेनी इट इज़ मेड अप ऑफ. तो आप इसके लिए कहाँ जाएंगे, द रीजन वेयर द फर्नीचर जहाँ पे मिलता है वहाँ से लाएंगे. आपके घर में ये ऑब्जेक्ट्स वुडन है. कभी आग लगेगा, इफ देयर इज एन फायर द वुडन ऑब्जेक्ट्स कैन बी इजिली कैच फायर. तो हमें वुडन ऑब्जेक्ट्स को कहाँ रखना है, कैसे रखना है, सो दैट द फायर कैन नॉट कैच. सो द ग्रुपिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ स्टाइल, फॉर आवर बेटर यूजेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, एंड I said for it will give us conveniency. So here there is a group of objects that are made up of wood, and in that it is, you can say the table is made up of wood. There is, I said the desk is made up of wood, ladder is made up of wood, bookshelf is made up of wood, pencils are made up of wood,
Shade means a small shade of made of toys or something made up of wood, bird table, chest of drawers, and the wardrobe. All are these are the I said that group of objects that are made up of wood. Here we can see like here the group of objects that are made up of what? Plastics. Under this that we can see there is plastic milk and juice bottle, we can see plastic lumbers where it is there, play related sets in the schools that you have seen made up of plastic, new bottles made up of plastics, plastic detergent bottle, buckets, containers, and so many other I said that objects are there which are made up of frisbees, stadium seats, etc. These are what made up of plastic. So it is in a group of objects that are made up of plastics. So many others also. Here let us see the group of objects that are made up of metals. So the metals are there. It is you know that there is a hammer, there is a pliers like nails, keys, locker. It is a fork, then knife. There is spoon, kettle, rings, taps. So you can say that so many things are there. It is made up of I said that metals. Metal can be iron, metal can be aluminum, metal can be copper, metal can be so many kind of what chromium, different kind of metals are there and generally used iron, aluminum, copper and then zinc. These are the metals that we are generally using in our life. So उससे क्या क्या utensils आपने देखा that we can say grouping that okay here we have a metals related objects and it will be in that corner of the house it will be. There is a group of objects that are made up of leathers. Yeah, you can say the hat is made up of leather. There is a what wrist watch. Then the wrist watch related that leather it is. Bag, your shoes, your diary. It is made up of what? Leather. Let us collect as many objects as possible from around us. हमें कलेक्ट करते हैं कि हमारे आसपास कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं and each of us could get some everyday objects. हमें अब everyday objects use में मिल जाएंगे. From home we could also collect some objects from the classroom every day or from the outside the school जो कि हम लोग everyday objects use करते हैं. We can, if you are a student or something going school going one, then you can see there is you can find chalks, the pencils, the notebooks, the rubber, duster. So in the school you can find these are the things are there. Chalk मतलब लिखने के लिए होता है. Pencil chalk it is on the board. आपके स्कूल में जो बोर्ड होता है उस पर चॉक से लिखा जाता है. पेंसिल है, you know that notebook, rubber, duster, hammer, a nail, सोप आप घर पे देख सकते हैं, नेल घर पे देख सकते हैं, हैमर, स्पोक ऑफ द व्हील, व्हील का जो स्पोक्स होते हैं, व्हील चक्का जो आपका साइकिल होता है उसके व्हील, चाहे बाइक के व्हील्स, एंड देन बैट, मैच बॉक्सेस, salt, potato, so many things that you see everything in your house, in the school, in the outside. These are there and we have to categorize. Okay, we see it every day. And we can see that there is some classroom objects are there. Here it is, you can see classroom objects like you can say that there is a desk is available. Yeah, here it is, this is the desk. And there is a chair available, books available, notebooks, pencil case, backpacks. These are what? School related, I said that classroom related objects. There is a scissor sometimes needed, compass needed, pins needed, clips needed, pencil needed. So many things are there. Stapler needed. I said pen needed. So many things are there. Calculator needed. So these are the objects related to study and then classroom objects. We can also list objects that we can think of, जो हम लोग सोच सकते हैं उसको भी, but cannot bring to the classroom. उसको सोच सकते हैं लेकिन classroom में नहीं ला सकते. For example, we can say that we can think of wall of my house, wall of the school. We cannot bring into the class the trees, doors, tractor, road. We can think of, but we cannot be bring. Separate all objects from this collection that are made from the paper or wood. हमें फिर देखना है कि हमारे घर में क्या क्या चीज़ें वे if we have to see which are the
things made up of, which are the objects made up of paper. तो जो पेपर से बने उसको एक ग्रुप में डालो, जो वुड से बने उसे एक ग्रुप में डाल दें, जो मेटल से बने उसे अलग ग्रुप में डाल दें. So okay, this way we can see in how my house is paper made, which are the objects, wooden made, which are the objects, metal made, which are the objects. This way we have divided all objects into two groups. Here it is on the basis of that one. It is we can say it is a paper or related to that wood. We have to drive into two. So the grouping is based on this one. The two will be there. So you can be number of groupings can be there. 3 groups, 4 groups, wood, metals, paper, and you can say plastics. Different kind of what I said, that grouping you can create. Let us see the activity. One group has the objects that are made from the paper or wood, while the other group has the objects that are not made up of these materials. Means one group has where it is, you have to categorize it is made up of paper or wood. एक group देखना है जो कि इस चीज़ का नहीं बना हुआ है. Similarly, we could separate the things that are used for preparing food. हम लोग उसके लिए जो कि वो ऑब्जेक्ट जो कि फूड बनाने के लिए यूज़ होता है एंड एक जो नहीं यूज़ होता है, इस तरीके से ग्रुप में चेंज कर सकते हैं. लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमैटिक, और थोड़ा सा और सिस्टमैटिक के लिए और जाते हैं, और ये सिस्टमैटिक करता भी है. लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन अ टेबल 4.1. यहाँ पे दिया हुआ है एक टेबल है, इसमें हमें लिस्ट करना ऑल ऑब्जेक्ट्स to and identify the materials that each one is made up of, और उसके बाद हमें किस चीज़ का बना हुआ है. So here we can see like the plate और थाली. ये प्लेट और थाली किस चीज़ का बन सकता है? It is an object. It can be made up of steel, it can be made up of glass, it can be made up of plastics, or it can be made up of wooden also. So many others can be there. And then pen can be made up of plastics, and pen can be made up of what? Metal. So that is a correct categorization. The one side objects, another side the materials they are made up of. It would be fun to make this a large table collecting information about as many objects as possible. तो आपका बहुत fun होगा, interesting होगा कि we are making lots of objects, information सब collect कर रहे हैं. It may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made. और फिर जब बहुत सारे आपके पास मटेरियल रहेंगे कहीं पर, तो उसका बता लगाना कि ये किस मटेरियल का बना हुआ है, इट विल बी डिफ़िकल्ट. तो पहले ग्रुपिंग कर लें, तो ग्रुपिंग से बहुत आसान होता है कि अच्छा ये अब मेटल है तो मेटल से रिलेटेड ये ऑब्जेक्ट्स फटाक से बता देंगे ये मेटल का बना हुआ है ग्रुप देख कर ही. वुडन से रिलेटेड ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, वुडन का ग्रुप में आप ये देख लिए फटाक से बता देंगे. सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ लार्ज इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स एंड ऑल, तो आप ग्रुपिंग करके बनाएंगे तो इट विल बी ईजी टू वॉट, उस चीज़ का कैटेगराइज करके इजीली आप बता सकते हैं ये चीज़ इसका बना हुआ है. इन सच केसेस डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, टीचर एंड पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ. आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन सी दैट द बेड इज मेड अप ऑफ व्हाट, वुडन. पिलो इज मेड अप ऑफ कॉटन. सो कॉटन एंड सम क्लॉथ फैब्रिक्स. So everywhere it is you have to categorize, go and ask sir it is made up of what. तो ये आपके दिमाग में धीरे धीरे क्लियर होने लग जाएगा. Table 4.2 lists some common materials, and you can also add more materials in the column that are known to you. आप इसमें और भी हम जोड़ सकते हैं. Now try and think everyday objects you know that are made mainly of these materials and list them in the column 2. So here we have different types of objects that are made from the same material. So here the material is, I said that wood, paper made, leather made, plastics made, cotton. Yes, and आपको उसके accordingly categorize करना है grouping. And here the objects that made up of these materials. So wood, I said that wood related objects, if you'll see, it is the chair, it is made up of wood. Table made up of wood. Plow मीन्स खेती करने वाले गांव में ट्रेडिशनल प्लॉ जोतने के लिए बनाया जाता है. बुल्लक कार्ट, इट इज़ मेड अप ऑफ वुड एंड इट्स व्हील्स मेड अप ऑफ, सो मैनी थिंग्स आर मेड अप ऑफ वुड. मीन्स आप हाउसेज में आएंगे तो देयर इज एन अलमीरा, वार्डरोब, डिफरेंट थिंग्स विच आर द मेड अप ऑफ. विल हैव टू सी विच आर मेड अप ऑफ व्हाट, पेपर. So related to the paper, we can say that the books are made up of paper. You know, in your house, notebooks, newspaper, toys, calendars, etc. These are the made up of paper. In the
Similar manner that there is some, I said that objects made up of what I said, it is leather. Leather, it is related to, we can say that made up of bags, hats, watches, etc. These are the made up of what? Leather. In the similar manner, the objects made up of plastics, we can say like the toys are made up of plastics. We can say that some kind of what toys are there made up of plastic. Bucket is made up of plastics. Comb is made up of plastics, etc. So many things are made up of what? Plastics. You can categorize, and you can also categorize which are the made up of cotton, and then it can be your, I said that your cloths are made up of cotton, then your like pants, it is made up of cotton, your shirt is made up of cotton, maybe your, I said gloves is made up of cotton. So different categorization, different materials we have, and what are the objects can be made with the help of these materials. This is the way we can be able to see the different objects made up of same material. Cotton से different बन सकते हैं, plastic से, leather से, paper से, and all. What do we find from these tables? First, we grouped objects in many different ways. हमने group करते हैं many different ways से. We then found that objects around us are made of different materials. जब हम grouping करते हैं तो हमें पता चलता है कि yes, objects are made of different materials. Otherwise हम लोग घर में, ऑफिस में और anywhere schools में, outside हम लोग ध्यान नहीं देते हैं. But when you start grouping, we start understanding it is made up of these materials. The different objects are made up of different materials. At times an object made up of single material. Yes, एक ही मटेरियल से है. कभी कभी एक ऑब्जेक्ट ही दो तीन मटेरियल से भी बना हुआ रहता है. एक फर्नीचर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टेबल, इट इज़ मेड अप ऑफ वुड. और लेकिन कुछ फर्नीचर ऐसे भी हो सकते हैं कि उसमें स्टील का भी यूज़ हो, एंड देयर इज एन वुडन इज आल्सो has been used. An object could be, I said that, also made up of many materials. And then again, one material could be used for making many different objects. तो एक ही material से बहुत सारे objects बन सकते हैं. Yes, plastic से you can think of कितने objects बन सकते हैं, paper से different objects बन सकते हैं. तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि एक ही material से बहुत सारे बन सकते हैं. What decides which material should be used for making any given object? तो एक object से इससे पता चलता है कि एक object से क्या क्या एक ऑब्जेक्ट जो बन रहा है वो किस मटेरियल से बन सकता है. इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल. इससे हमें पता हो जाएगा कि हमें डिफरेंट मटेरियल के बारे में जानना होगा कि इस ऑब्जेक्ट से, इस मटेरियल से कौन सा बेस्ट ये ऑब्जेक्ट, जो एक ऑब्जेक्ट है, किस मटेरियल से अच्छा बन सकता है. सो हमारे पास जो मटेरियल है, दिस मटेरियल्स आर, आई सेड, मेटल्स, ग्लास, दीज आर द मटेरियल्स. प्लास्टिक, फैब्रिक मीन्स क्लॉथ, कपड़े, कॉन्क्रीट, wood, ceramic, rubber, etc. These are what I said that we have material, and with the help of these materials different objects can be made. Let us see the properties of materials. Here the properties of materials means the material can be a transparent. Yes, we can see through that. Bending, वो बहुत soft होगा तो we can bend it, bendy. Rigid, ये थोड़ा सा यदि hard होगा, strong होगा तो rigid होगा. And some objects are very hard enough, and then some are very soft enough. The different ways, some properties of materials can be soluble, it can be insoluble. This way the material has different properties. Now under the properties we have to see what is the appearance, and it is one of the properties of material, appearance. And then appearance can be what? Lustrous and non-lustrous. Means एक shine करेगा और एक थोड़ा सा dull रहेगा. So the shining one is lustrous, and dull जो कि पूरे shine नहीं करेगा, non lustrous. So ये appearance के अंदर में हम लोग देख रहे हैं कि it is what I said, the appearance of an object depends on color, hardness, texture, luster of its material. Materials which are made by non-metals have dull appearance. Yes,
So material has the appearance can be of what उसकी different lustrous हो सकती है, non lustrous होती है, color के basis पे भी आप appearance देख सकते हैं, उसका texture के basis पर भी आप देख सकते हैं कि what is the appearance. So especially we can say that appearance is mostly it is decided on the basis of their lustrous property and non lustrous, and we can say that lustrous are mostly metal. आप metals क्या करते हैं, metals are shiny and then those are non metals means metal नहीं है, they are lustrous. wood is not lustrous, उसमें shine नहीं रहेगा, metal में चमक रहती है. आप metals को and किसी object को काटो और उसके जो cutting portion में चमक है, it means it is what lustrous है, it means what it is in a metal. otherwise non lustrous are generally non metal, वो metal नहीं होते हैं. So here we can be able to see like wood is dull in appearance because it is not made up of metal, but the gold is and silver bright and shiny in appearance. The gold आप देखोगे, silver देखोगे, वो shiny हो सकते हैं. silver कभी कभी एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से ऑक्साइड होकर उसका डार्क कलर हो जाता है, लेकिन उसको साफ करेंगे दोबारा इट विल बी ब्राइट एंड शाइनी. किसी भी मेटल को, कॉपर भी क्या होता है, जैसे कॉपर इज ऑल्सो मेटल एंड कॉपर को इफ यू से दैट कॉपर को यदि आप रख दोगे हवा में तो ये धीरे धीरे ऑक्साइड होके ऊपर में ब्लैक कलर आ जाएगा, इट विल बी अ ब्लैक कलर. सो तो वी कैन से दैट, हाँ, लेकिन दोबारा आप उसको साफ करें एंड देन या उसको रब करें एंड देन अगेन इट विल स्टार्ट शाइनिंग, मीन्स लस्ट्रस. द मेटल्स आर लस्ट्रस, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस. मटेरियल्स यूजली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. मटेरियल जनरली अपने आप एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, या आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम द कॉपर और एल्युमिनियम. लेकिन हाँ ये है कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम देखने में अलग है, अपीयरेंस अलग है, लेकिन ये तीनों में सिमिलरिटीज ये हैं कि ये दीज आर व्हाट, ये क्या है आपको, मेटल्स. दीज आर व्हाट, मेटल्स. ये सिमिलरिटी है बट दे आर, आयरन इज डिफरेंट, यस, कॉपर इज डिफरेंट, एल्युमिनियम इज डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ कलर, देयर ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस, ये सब डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस. सो at the same time there may be some similarities between the iron, copper and aluminum and that are not there in the wood. तो वुड में तो ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आयरन कॉपर डिफरेंट है, एल्युमिनियम डिफरेंट है, लेकिन फिर भी ये सब एक सिमिलरिटी है कि दे आर मेटल. लेकिन वुड में ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता कि डिफरेंट है लेकिन ये वुड है. सो here the sometimes materials can be what I said that different but they have similarities also. In this activity we will see collect small pieces of different materials. उसे collect करें, जैसे आप पेपर को collect किया, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर सब एंड अल्मोनियम सीट एंड चॉक को collect कर लें. और आपको क्या करना है, आपको देखना है डू एनी ऑफ दिस अपीयर शाइनी. आपको देखना है शाइनी है तो वो लस्ट्रस है, नहीं शाइनी है तो नॉन लस्ट्रस, नॉन मेटल. फिर आपको अलग कर दें, सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू ए ग्रुप, और शाइनी मटेरियल्स को एक ग्रुप में डाल दें और जो नॉन लस्ट्रस है उसको अलग ग्रुप में डाल दें. Now observe as the teacher cuts each material into two pieces. Suppose हर एक को हम दो पीस में काट रहे हैं and look at the freshly cut surface. यदि आपने कोई भी मटेरियल है, चाहे वो पेपर है या एल्युमिनियम शीट है, चॉक है, वुड है, काटा आपने तो टू पार्ट्स में काटा, तो जहाँ कटिंग पोर्शन है वहाँ पर कैसा है, वो कट सरफेस कैसा है. यदि शाइनी है तो वो दैट इज लस्ट्रस, या शाइनी नहीं है तो नॉन लस्ट्रस. और शाइनी होने का मतलब लस्ट्रस है, इसका मतलब वो मेटल है. अंडरस्टूड. Materials with luster or shining. So like I said that gold, silver, copper, aluminum and iron metal alloys such as metal alloys. alloys कहने का मतलब होता है जब कोई मेटल दो तीन मेटल से मिलकर बने तो उसको alloys कहते हैं. तो स्टील में दो तीन मेटल से मिलकर बनते हैं, स्टेनलेस स्टील, ब्रास एंड डायमंड. These are what I said that lustrous one. Here you can see the silver is lustrous, gold is lustrous, copper is lustrous. So yeah, these are metal and here it is gold. You can say that gold coins. These are the gold coins and this is lustrous as well. And here we have what, diamonds. The diamonds is also lustrous, a stronger one, shiny one. So materials can be divided on the basis of their, what I said that appearances in the form of lustrous and non-lustrous. Materials without luster, like paper is non-lustrous, wood is non-lustrous, chalk is non-lustrous, cotton is non-lustrous, plastic, rubber, cardboard, all are non
lustrous. Is it okay? Here we can say there will not be a shiny paper, rubber, plastics, and we can say that wood. So these are non-lustrous. In case of appearance, instead of cutting, you can rub the surface of material. Rub करके भी आप पता लगा सकते हैं with the sandpaper and to see if it has luster. यदि sandpaper से rub करेंगे तो वहाँ पे चमक आ जाती है, तो वो lustrous है और metal है. Some metals often lose their shine and appear dull. कुछ मेटल क्यों lose अपने shine कर देते हैं और dull दिखते हैं? क्योंकि वो हवा में प्रेजेंट जो मॉइस्चर है उसके साथ वो ऑक्साइड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम. तो मॉइस्चर में भी मॉइस्चर हैज़ also some amount of oxygen, air has also some amount of oxygen, therefore that can, what I said, ऑक्साइड कर देता है और उसको lustrous ना होके it becomes dull. So we therefore notice that luster only on their freshly cut surface. हम लोग जब कट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को और वहाँ पे there is an, I said, that shiny है, luster है, then it is a metal itself. When you visit an iron smith, means एक लोहार की दुकान पे जाते हैं और या उसके वर्कशॉप पे जाते हैं, तो look out for freshly cut surfaces of metal rods. तो metal rods के freshly cut surfaces को देखते हैं and to see if they have luster. आप देखें उसको luster है कि नहीं, चमक है. तो there will be a shiny and there will be a luster. This is the appearance of that material. Let us see about hardness of a material or object and its softness. So hardness, if you are taking any object and if you are putting the compressional force, उसको compress करोगे तो compress नहीं होगा तो hard है, and compress करोगे और दब जाएगा तो इसका मतलब है वो soft है, hard नहीं है. So when you press different materials with your hands, आप अपने hand से press करते हो तो some of them may be hard to compress. उसको इतना hard होगा कि compress ही नहीं कर पाओगे, while others can be easily compressed. तो जो compressed नहीं हो रहा है, that is what I said, it is, जो compressed नहीं हो रहा है, it is what you can say that it is hard, and those who are compressed easily under the pressure of hand, it is what, soft. So I said take a metal key, metal की चाबी लें आप, metal made चाबी, and then try to scratch with it, उससे scratch करें the surface of a piece of wood. wood के piece पे आप उसको scratch करें, aluminium के piece पे scratch करें उस की से, and a piece of stone पे करें, nail पे करें, candles पे करें, chalk and any other material object. और उसके स्क्रैच करने से की से आपको जहाँ साइन नज़र आएगा दैट इज़ लस्टर, जहाँ पे साइनिंग नहीं नज़र आएगा इट विल बी व्हाट, नॉन लस्टर. सो हम लोग वो हमें लस्टर और नॉन लस्टर भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब है ये भी है कि यदि आप स्क्रैच कर रहे हैं एंड किसी चीज़ पर और इट इज़ एनी स्क्रैच इज़ नॉट कमिंग, तो दैट इज़ एन हार्ड ऑब्जेक्ट. दैट इज़ एन व्हाट आई सेड दैट इट इज़ हार्ड ऑब्जेक्ट. यदि स्क्रैच हो रहा है और इसमें कोई स्क्रैच नहीं हो पा रहा है, इफ द स्क्रैच इज नॉट टेकिंग प्लेस, इफ यू आर विद द हेल्प ऑफ मेटल की स्क्रैच कर रहे हो और स्क्रैच नहीं हो रहा है, देन देयर इज एन हार्ड वन. यदि आप मेटल की से स्क्रैच कर रहे हो और साथ में उसमें इजीली स्क्रैच हो जा रहा है, तो दैट इज व्हाट आई सेड, सॉफ्ट वन. वो क्या है, सॉफ्ट है. You can easily scratch some materials while some cannot be scratched so easily. तो there are, जब आप when we are doing scratching, तो some materials are easily scratched and why others cannot be scratched so easily. So it means materials which can be compressed or scratched easily are, what I said, that they are soft materials. These are what, soft. Those who are compressed easily, scratched easily, उस पे scratch आ सकता है, they are known as soft. While some other materials which are difficult to compress, जिसको compress करने में difficult हो और scratch भी ना आए, that is what I said, that is, we can say it is hard materials. For example, we can say like cotton or sponge is a soft while iron is hard. In appearance, materials can have a different properties. Appearance में बहुत सारे अलग properties हो सकते हैं, like luster भी हो सकता है appearance में, उसकी hardness भी हो सकती है. Yes, luster, non-luster, hardness, softness, rough हो सकता है, वो देखने में rough हो, उबड़ खाबड़ टाइप का,
और देखने में बड़ा स्मूथ हो, तो ये अपीयरेंस होता है। एक्चुअली में इन द मोस्टली इफ आई टॉक अबाउट इन केस ऑफ अपीयरेंस, in case of appearance, this is important one. Color and all these things are also important, but firstly when you see, color is also making an important part of appearance, but here I am talking about, yes, if it is luster sign hai ki nahi hai, yeah, it is a non luster. This is the properties of that material. Yes, another, it can be like I said, there can be a hard material, or it can be what I said, soft material. And then another one that we can say that that is a rough one, rough hai, like I said that rough like, or it is of what is smooth material. If it is very much smooth, that it is a smooth material. So it is also playing a role to understand that appearance. I said, can you think of other properties that describe the appearance of a material? Yes, a part of it, so many other things are there, which is also making making their appearance. That is, I have said, as like a color and others. Now that we are going to see another properties of material, that it is soluble or insoluble. Materials or an object is soluble or insoluble. यदि कोई soluble है तो like suppose for understanding is it soluble or not, suppose I have a glass has some water, और inside the water हमने कुछ मिलाया, suppose I have given sugar, और sugar and thereafter हमने इसको मिलाकर फिर थोड़ा सा क्या किया, we have stir it, हिलाया with the spoon and all, और if the sugar will disappear in the water, then हम लोग बोलेंगे sugar is soluble in water. एंड यदि हमने सैंड डाला एंड सैंड डालकर देखा और स्टीयर किया, सैंड हमें डिसअपियर नहीं हो रहा है, वी आर एबल टू सी सैंड इन द वाटर, देन इट इज एन व्हाट वी कैन से इनसॉल्युबल. सो दिस टू थिंग्स दैट वी हैव टू सी हियर, इट इज सॉल्युबल or insoluble. So collect samples of some solid substances such as हम लोग करेंगे sugar, salt, chalk powder, sand and sawdust. These are the 5 and इस 5 को हम लोग 5 different glasses में water ले लेते हैं एंड उसमें मिलाते हैं और स्पून से उसमें स्टीयर करते हैं. अब ये देखना है कि कौन डिसअपियर हो रहा है, कौन डिसअपियर नहीं हो रहा है. यदि कोई डिसअपियर हो गया तो सॉल्युबल है, इफ़ इट इज़ नॉट डिसअपियरिंग इट इज़ इनसॉल्युबल. सो वी हैव टेकन 5 ग्लासेस और बीकर्स. तो हमने बीकर देखेंगे, ये हमारा एक बीकर ऐसे दिखता है, यस और नॉट, एंड हर एक बीकर में फिल ईच ग्लास और बीकर अबाउट 2/3 विद वाटर. उसका लगभग आपको क्या करना है, सपोज एक ग्लास है, suppose I am making one glass, or it has been divided into suppose it is been divided into 3 equal parts. It has been divided into 3 equal parts, and means this is, so this area if I am talking about, if the water is filled up to this, so only one part, there are 3 parts are there, total 3 parts are there, only one part is filled, it is 1/3. If it is filled with the 2 parts of that, it is known as 2/3. So I am talking about, यहाँ पे 2/3 कहने का मतलब क्या है कि आप पूरी ग्लास नहीं भर रहे हैं, लेकिन पूरे ग्लास को आप 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करें और उसमें आप क्या है 2 पार्ट्स फिल कर दें, तो 2/3 कहलाएगा. तो फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विद वाटर, सभी ग्लासेस को 2/3 वाटर भर दें, एंड एन स्मॉल अमाउंट ऑफ sugar to the first glass, sugar डाल दे दूसरे में, salt to the second. Similarly add I said that a small amount of chalk powder, sand and sawdust in the 3 other glasses. So after filling all these substances into the other glasses, we have to see which has been disappeared, which has not been disappeared. Here we can say that when putting the sugar inside it, then sugar has been disappeared, it means it is sugar is soluble in water, so sugar is, we can say, soluble. When we are making salt into water, then we have seen that the salt has been also disappeared in the water, means it is completely, after stirring it has been disappeared, it means salt is also soluble in water. स्टीयर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विद ए स्पून. सभी को हम लोग ये कंटेंट में स्टीयर किया स्पून से, एंड
वेट फॉर फ्यू मिनट्स, और थोड़ी देर के लिए वेट किया, एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द सब्सटेंसेस एडेड टू द वाटर. नोट योर ऑब्जर्वेशंस एज सॉन इन द टेबल 4.3. आपने उस टेबल 4.3 में देखिए कौन कौन सा हुआ डिजॉल्व, मतलब कौन सा सॉल्युबल है, कौन सा नहीं सॉल्युबल है. उस टेबल में वी विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेस हैव कंप्लीटली डिसअपियर्ड और डिजॉल्व्ड. मतलब डिसअपियर का मतलब डिजॉल्व हो गया है, इट मीन्स सॉल्युबल इन वाटर. एंड सम सब्सटेंसेस आर नॉट disappeared, it means they are not dissolved and it is insoluble. Like here you can see that if I am putting sand into the water, then the sand is in this region and we can say that it is insoluble. It is what? Insoluble. So here the sand is settling on the bottom of the glass, that we can say here it is not dissolved, and we can say sand is insoluble. So those who are not disappeared, but it is, you are able to see it is not disappeared. Yes, it is not disappeared. So if it is not disappeared, so it means we can say that it is what? Not soluble. Here now we have to see mixing different solid materials into water. हम लोग mix करते हैं, और हम लोग already we have discussed which are the substances we have to mix salt, sugar, sand, chalk powder, sawdust. And we'll have to see whether disappeared or not. If it is disappeared, it is soluble. So here we can say that there is what we have to talk about. What about the salt? What about the sugar? What about the sand? What about chalk powder? What about sawdust? So here salt disappears completely in water, it means it is soluble. And here we can say that sugar is also disappears completely in water. Then sugar is also what? Soluble. This is the properties of this material, sugar. Sand do not disappear, does not disappear. If it is not disappear, वो पानी में दिख रहा है, नीचे बैठा हुआ है, तो it means it is what? Insoluble. It is insoluble. Chalk powder also does not, थोड़ा सा मिल तो जाता है लेकिन पानी के कलर को चेंज कर देता है, तो डिसअपियर तो होगा. इट इज़ नॉट डिसअपियर कंप्लीटली, डज नॉट डिसअपियर. कुछ जगहों पे बता सकते हैं कि ये सॉल्युबल भी है लेकिन डज नॉट डिसअपियर कंप्लीटली. थोड़ा सा वाइट पानी हो जाता है तो डिसअपियर तो दिखता ही है. सो इट इज़ अगेन, कुछ लोग इनसॉल्युबल बोल सकते हैं, सॉल्युबल बोल सकते हैं, बट आई एम सेइंग इट इज़ सॉल्युबल, सॉरी इनसॉल्युबल. सॉ डस्ट भी बैठा रहता है पानी में, डज नॉट डिसअपियर, सो इट इज़ इनसॉल्युबल. चॉक पाउडर को इनसॉल्युबल भी कहा जा सकता है और सॉल्युबल भी कहा जा सकता है. कुछ लोग, अच्छा डिज़ोल्व हो गया, वो अब दिख नहीं रहा है, वाइट पानी दिख रहा है, तो क्या हुआ, वो अब चॉक तो नहीं दिख रहा है, इसके बेसिस पर इट इज़ व्हाट? सॉल्युबल. So this way we have seen substances or disappear in water or does not disappear in water. That this way we have seen like this कि वो soluble है या नहीं insoluble है. We say that these substances are soluble in water. So जो substances पानी में I said that disappear, okay, they are soluble. Other substances do not mix with water and do not disappear even after we stir for the longer time. हम लोग stir भी longer time तक किए, तो these substances are insoluble in water. तो जो आपने वाटर में पुट किया and then try to mix with water, stir it water for a longer time, but it is not disappear, means it is what? Insoluble. Water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substances. Yes, water can dissolve all the minerals that हम लोग अपने फूड में मिनरल्स जो खाते हैं उसको डिज़ोल्व करने की पूरी डिज़ोल्व करता है. दैट इज़ आई सेड. डू लिक्विड्स आल्सो डिज़ोल्व इन वाटर? लिक्विड, अब हमने पूछा जाता है कि लिक्विड्स डिज़ोल्व हो सकता है, तो लिक्विड में जनरली कुछ चीज़ें, जैसे आपने घर में कभी देखा होगा इन द वाटर इज रूह अफ़ज़ा लिक्विड होता है और पानी भी लिक्विड होता है, दोनों को यदि मिक्स करेंगे तो वो डिज़ोल्व हो जाता है, वो उसको नीचे जाता है, बैठ जाता है, और उसको स्टीयर करेंगे तो डिज़ोल्व हो जाता है. तो इसका मतलब है कि जो दो लिक्विड, एक लिक्विड वन, व्हेन द लिक्विड वन एंड लिक्विड टू डिज़ोल्व हो गया तो इट इज़ मिसिबल. इसको क्या कहते हैं हम लोग? मिस. हियर वी कैन, हियर इट इज़ liquid 1 and liquid 2 are
completely dissolved, it is known as miscible, मतलब वो mix हो गया. But when the liquid 1 and liquid 2 does not dissolve, it is what? Immiscible. वो मिक्स नहीं होंगे. और जैसे आपने बोला दैट आपके पास एक क्या है, रूह अफ़ज़ा लिक्विड है और वाटर है, तो आपने रूह अफ़ज़ा लिया वो भी लिक्विड है, वाटर लिया वो भी लिक्विड है, बट वो डिज़ोल्व हो जा रहे हैं तो वो मिसिबल है, डिज़ोल्व हो जा रहा है. लेकिन यदि आपने कोई ऑयल लिया, कोई भी ऑयल और वाटर लिया तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा. ऑयल हल्का होता है, वाटर भारी होता है. ऑयल इज़ लेस डेंसिटी मीन्स लो डेंसिटी मीन्स हल्का होना, वाटर हाई डेंसिटी हो तो नीचे हो जाता है, और वाटर ऊपर तैरता है, ऑयल ऊपर तैरता है, वाटर नीचे रहता है. So this way you can see that do liquids also dissolve in water? Yes or no? Both the answers are there. So collect samples of vinegar, lemon juice, mustard oil or coconut oil, kerosene or any other liquids. Here we can say that vinegar can easily dissolve. Vinegar पानी में dissolve हो जाएगा in water. Lemon juice is also. उसके बाद अच्छे से जूस का, लेमन जूस का टेस्ट लेते हुए आप जूस पिएं, जूस जैसा रस पिएं आप. Mustard oil, oil है तो it will not dissolve. Coconut oil in water does not dissolve. It is not dissolve. Kerosene oil, any oil will not dissolve because oil is lighter and they will be on the upper layer. Take a glass of tumbler and fill it up with the half with water. उसमें half water डाल दें and add a few spoonful of one liquid to this and stir it well. और अब उसमें से कोई भी एक liquid डालें, stir करें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें. Let it stand for 5 minutes. Observe whether the liquid mixes with water or not. तो यहाँ vinegar जो होगा it will be mixes. Lemon juice get mixes. But mustard oil, coconut oil, kerosene and these other liquids will not dissolve. If it is oil, not dissolve. Here you can say that it is showing completely dissolved. Here it is showing that there is below there is water and above there is what? Oil. So if it is oil kind of it will not dissolve, and if it is water and oil, so water it is a heavier one, heavy density वो नीचे रह जाएगा, oil हल्का होता है, it is above. बट यहाँ पे क्या दिखा रहा है? कंप्लीट मिक्सिंग. यहाँ पे इट इज शोइंग मिक्सिंग एंड इट इज नॉन एज मिसिबल. द टू लिक्विड्स आर मिसिबल और मिक्सिंग. सो रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड्स, एज मैनी डिफरेंट लिक्विड्स एज आर अवेलेबल टू यू. तो जितने लिक्विड्स आपके पास हैं आपस में उसको मिक्स करें एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन एज इन द टेबल 4.4. वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्सड विद वाटर एंड हम लोग ये नोटिस करेंगे कि कुछ लिक्विड्स कम्प्लीटली दूसरे लिक्विड में मिक्स हो गए हैं एंड सम अदर्स डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड फॉर्म ए सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम. कुछ देर के लिए रखा गया तो देखा गया कि कुछ लिक्विड वाटर में डिजॉल्व नहीं हुआ और डिफरेंट लेयर बना लिए. एंड हेयर वी हैव सेड दैट it has been dissolved, mixed completely, it has been dissolved. लेकिन यहाँ पर आपने क्या देखा? टू डिफरेंट layers बन गया. It is not dissolved. So if I am putting vinegar into water, yes, it mixes well. Lemon juice into water, yes, go and do experiment. Yes, it is also, it also mixes well. Mustard oil does not mix, and coconut oil it is also does not mix. Kerosene oil it is also, we can say, does not mix. Oil will not mix. Some gases are soluble in water whereas others are not. So in water one thing is there, oxygen is dissolved. In water oxygen is dissolved. What, जैसे आपने कभी we have seen that fishes are living their life, some plants are living in their life in water. तो वो कहाँ से ऑक्सीजन ले रहे होंगे? तो दे आर टेकिंग ऑक्सीजन विच इज डिजॉल्व इन वाटर. तो कैन वी से दैट yes, some gases are there which can be soluble in water? Yes, oxygen is soluble in water. So water usually has a small quantities of some gases dissolved in it. इसमें होता है, for example, oxygen gas dissolved in water, and it is very important for the survival of animals. जो animals water में रहने वाले उनके survival के लिए, बचने के लिए, and plants that live in water उनके भी survival के लिए, that oxygen is available in water that is dissolved form. Here you can say that, yeah,
water is at different level and the oil is at different layer, and oil is lighter density, low density, it is above, and water is below, high density, it is below. So they are not mixing. Now let us see, objects may float or sink in water. So which one will sink? If I am making a container, it is filled with water. तो जो हैवी होगा, द ऑब्जेक्ट्स विच विल बी हैवी और हाई डेंसिटी, दे विल सिंक इनसाइड, एंड दोज हु आर लाइटर, लो डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, लो डेंसिटी लाइटर होंगे, हल्का, लो डेंसिटी मीन्स हल्के होंगे, लाइटर, तो दे विल व्हाट, फ्लोट ओवर द water, they will float over the water. So while doing activity 4, you might have noticed that insoluble solids are separated out from water. आपने देखा होगा जो soluble नहीं है वो पानी से अलग है. And you may have also noticed this with some liquids in activity 5 में देखा होगा कि mix नहीं हुआ. Some of these materials that did not mix with water floated to the surface of water. क्योंकि हल्का है और ये तेल आप देख रहे हैं, this oil is floating over the water. Others may have sunk to the bottom of the tumbler. Yes, जो soluble हो रहे थे वो पानी के नीचे गए और आपने स्टीयर किया, जैसे आप रूह अफ़ज़ा पानी में डालेंगे, then what will happen, and thereafter स्टीयर करेंगे, it will be mix. विनेगर डाला, mix. Yes, then लेमन जूस डाले, वो भी आपका चीनी के साथ हैवी हो जाता है लेमन जूस, and if you are making into water, it will go inside the water and mix it. So this way there will be someone will sink, जो हैवी होंगे sink होंगे, and those who are lighter and do not intermix, जो मिक्स ही नहीं होंगे, तो they will, what I said, float above. Here you can see that some objects float in water and while others are sink in it. Here the heavier things are there, key, coins, other metals which are heavier, they are sink, and they are the lighter one is what, floating. So here the lighter one is floating above and it is what, sink down, the heavier one. We notice many examples of objects that float in the water or sink. हम लोग notice करेंगे, फिगर में कर रहे हैं. Dried leaves fallen on the surface of a pond. यदि एक dried leaves यदि pond के surface water पर गिरता है तो वो float करता रहेगा. And a stone that you throw into this pond, और यदि stone इस pond में आप फेंकते हो तो वो क्या हो जाएगा, sink हो जाएगा, because stone is heavier. Few drops of honey that you left fall in a glass of water. यदि आप हनी को एक ग्लास में डालेंगे, तो हनी जो होती है इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और वो that honey will keep on moving inside the water, that they will sink, उसकी डेंसिटी हैवी होती है. तो what you are able to see, what happens to all of this, तो हम लोग को बूझो, would like you to give him 5 examples each of the objects that float and those that sink in water. तो आप जाकर देखिए कि कौन सी चीज़ float होती है and which are getting sink in water. So what about testing these same materials to see if they float or sink in other liquids like oil? So that is the experiment you have to do, कि वो कौन सा float हो रहा है, कौन सा sink हो रहा है in the water. Now we are going to see the another, I said, properties of material that is related to transparency. Now if I am talking about transparency if we have to see, so transparency can be divided into 3. Here it is, one is transparent, another it is translucent, and then another it is about opaque. So transparent, यहाँ पे आप देख सकते हैं that you can see here that a person is watching a glass and it is completely, you can see through, and then on the other side this is what I said, transparent. It is what, transparent. लेकिन यहाँ पे it is also able to look outside but it is not clear, so it is a translucent, और जिसमें बिल्कुल नहीं दिखे, it is what I said, opaque. So it is a transparent, and it is what, where it is not completely visible, it is what, translucent, and it is not completely
outside you can see through that materials. यदि आप you cannot completely see through that material, that it is what? Opaque material you can say. So it is also, I said that the properties of material: transparent, translucent, transparent, translucent, opaque. Those substances or materials through which things can be seen, those substances or material through which things can be seen, जिसके द्वारा वो substance और material जिससे आप देख सकते हैं, are called transparent. In the figure here you can see, in this figure, the glass, water, air and some plastics are examples of transparent materials. कभी कभी आप if you are going into the shops में क्या रखा रहता है, आप देखेंगे कि plastic made boxes are there and inside there is some chocolates, some toffees are there. You can, it is transparent, that is a plastic which is transparent, and around any portion in this world air is there and you can see any objects in this world from your eyes, and in between that objects air is available. जो air आप सांस ले रहे तो इसका मतलब air is also transparent. In the aquarium you can see there is a water along with the fish. तो fish को आप उस water के through देख सकते हैं. You can, the substance or material through which you can see the things can be seen, वो transparent है. Glass से भी आप देख सकते हैं. So these are the transparent materials. Shopkeeper usually prefer to keep biscuits, sweets and other eatable in transparent containers. So transparent containers में रखते हैं. It may be made up of glass or plastics so that buyers can easily see these materials or items and think about purchasing. तो इसलिए वो transparent बना रहता है. ये it can be of glass or it can be of plastic. On the other hand, there are some materials through which you are not able to see. Some materials through which you are and anyone is not able to see, this material is considered as opaque. These materials are called, yes, some material through which you are not able to see, it is opaque. Means you cannot tell what is kept in a closed wooden box. यदि wooden box बना हुआ है उसके अंदर क्या है आप नहीं बता सकते. यदि it is a box or cartoon is made up of cardboard, उसके अंदर क्या बना हुआ आप क्या है नहीं बता सकते. A metal container, आप metal के आस पार नहीं देख सकते हैं तो you can't see. Then it is these are what I said, opaque. So wood, cardboard and metals are examples of opaque material जिसके through आप नहीं देख सकते हैं. The material through which you cannot see, it is what I said, opaque. Here you can see like there is this is one glass. ये glass एक खिड़की है, window है जिसके आप खड़े हैं and you can see outside easily. It means it is transparent. ये क्या है? Transparent है. It is what? Transparent. And यहाँ पर that you can see but it is not clear. इसमें आपको ये भी एक glass है किसी चीज़ का बना हुआ है, आप इसमें से देख पा रहे हैं but not clear. It is what? Translucent. And here you cannot, in this one you cannot completely see, it is what? Opaque. So do we find that we can group all materials and objects without any confusion as either opaque or transparent or translucent? Yes, we can be able to do with the help of understanding what is transparent, what is translucent and opaque. On the basis of that, material can be what? Grouped and categorized. Here you can see that there is some portion of giraffe is visible. Here some portion of giraffe is visible but not clear. It is you can see but it is not clear. और यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं देख सकते. In this one you cannot see. So it is what? Opaque. It is what? You can see but not clear. It is translucent. And here it is completely clearly you can see. It is what? Transparent. Let us see the activity. Take a sheet of paper and look through it towards a lighted bulb. एक पेपर ले ले और lighted bulb की तरफ देखें. तो आप पेपर आपने आँख के आगे रख लेंगे तो you cannot see towards the light bulb. Means वो पेपर किसकी तरह काम करेगा? It will act as a opaque. It is what? It will act as a what? Opaque. Now make a note of your observation. इस observation का एक note बनाएं. And now put 2 to 3 drops of some oil and spread it
ऑन द शीट ऑफ पेपर। तो आप पेपर पे क्या लें, कुछ जगहों पर 2 से 3 ड्रॉप ऑफ सम ऑयल डालें एंड स्प्रेड इट। तो जिस पोर्शन में ऑयल है अब वहां से देखें तो आपको थोड़ा थोड़ा बल्ब दिखेगा, फेंट दिखेगा, डल लुकिंग आएगी। सो you can say that look again towards the lighted bulb through that portion of the paper on which oil has been sprayed। तो जहाँ पे ऑयल स्प्रेड है उससे आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा दिखेगा। इट इज़ व्हाट आई सेड, दैट इज़ फेंट काइंड ऑफ इट, और उससे आपको ये कह सकते हैं इट इज़ एन ट्रांसलूसेंट। सो डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल दैन बिफोर। अब पहले तो दिख भी नहीं रहा था, अब थोड़ा सा क्लियर हो गया थोड़ा सा, but clarity is not more, you can say it is translucent। but can you see clearly through the oil paper? क्या आप oil paper से clearly देख सकते हैं? is everything on the other side of it visible? perhaps not, पूरा आपको नहीं दिख रहा है। the material through which objects can be seen, देखा तो जा सकता है, the material through which objects can be seen but not clearly are known as translucent। that is known as what? Translucent। remember the oily patch on a paper when we tested food items for the presence of fats। आपने earlier chapters में पढ़ा था कि on a paper if there is an oily patch कब होता है, जैसे suppose करो you take a food and wrap it with the paper and if the paper has somewhere it is in a some patch, oily patch, that means that food has fats। उस food में क्या है, फैट है। यदि आपने पेपर को फोल्ड किया, किसी आपके पास फूड है उसको आपने पेपर पे रख दिया, उसको फोल्ड किया, उसके बाद छोड़ा, तो उसमें यदि पेपर हैज़ ऑयली पैच मीन्स दैट हैज़ फैट्स। हियर यू कैन सी दैट इट इज़ एन ऑयली, हियर यू कैन से दैट इट इज़ एन ऑयली पैचेस पेपर। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि फिंगर दिख रहा है लेकिन इट इज़ नॉट क्लियरली ऑन द अदर साइड ऑफ द पेपर, so it is means it is translucent। in the similar manner here that it is what we have in a torch and then torch has lights and the lights it is coming out of it and similar amount, और यहाँ पर एक object रखा हुआ, इस object से cross करके light is coming, so all the light is easily able to pass through that। it is means I said in बचपन में आपने कभी किया होगा with the help of torch, तो it is क्या हम लोग बोलेंगे, it is what? transparent। it is what? transparent। अब यहाँ पर भी एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिससे हम लोग लाइट भेज रहे हैं, बट दिस लाइट सम ऑफ द लाइट्स आर एब्जॉर्ब बट फ्यू लाइट्स आर पास थ्रू दैट। तो इसका मतलब है इट इज़ नॉट कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट बट इट इज़ व्हाट? ट्रांसलूसेंट। तो ये क्या आपका ट्रांसलूसेंट है। एंड इफ देर इज एन ऑब्जेक्ट एंड इफ यू आर मेकिंग द लाइट ऑफ द टॉर्च, और टॉर्च की लाइट उस पर मार रहे हैं एंड नो लाइट इज पास थ्रू दैट, इट मीन्स इट इज़ व्हाट? ओपैक। दैट वॉज ट्रांसलूसेंट टू। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल? आप सोचें उसके बारे में, क्या सोच सकते हैं? एंड सोच सकते हैं तो प्लीज़ कीप ऑन थिंकिंग बिकॉज विच आर द ट्रांसलूसेंट। वी कैन देयर फोर ग्रुप, और जो ट्रांसलूसेंट होंगे, जो ओपैक होंगे, ट्रांसपेरेंट, उनका अलग अलग ग्रुप तैयार करें। ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट एंड ओपैक का अलग ग्रुप तैयार करें। सो यही इसका पहली है कि सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ ए टॉर्च विद योर पाम एट ए डार्क प्लेस। एक तो डार्क प्लेस पे जाएं और एक टॉर्च लें और अपने पाम पर, आप हाथ के पाम पर उस टॉर्च को जलाएं, तो आपको हल्का हल्का रेड नज़र आएगा, हल्का हल्का, लेकिन आप देख नहीं सकते हैं। इसका मतलब है कि आपका हाथ, जो आपका पाम है, ऑफ पाम ऑफ योर हैंड विल एक्ट एज एन व्हाट? ओपैक। नाउ स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम, और इसको ऑब्जर्व करें, आपको पता लगेगा इट इज एक्टिंग एज एन ओपैक। Here you can see it is completely able to see, it is transparent. It is, you can see through this, it can be seen but not clear. It is what? Translucent, or it is what? Not able to see at all. So it is what? Opaque. Now here the see in this picture, the girl is there. She wants to know whether palm of your hand is opaque, transparent or translucent. आप बताएं, the palm of your hand is transparent, translucent or opaque? We learned that materials differ in their appearances. हमें ये भी सीखा कि materials differ अपने appearance में हैं, the way that mix in water or other liquids. Yes or not?
हमने ओपैक, ट्रांसपेरेंट नहीं पता, और कभी हमने देखा कि सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है। हमने ये भी वी हैव सीन दैट दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपैक और ट्रांसलूसेंट। मीन्स दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल कि वो फ्लोट कर रहा है, सिंक कर रहा है वाटर में, या मटेरियल ट्रांसपेरेंट है या ओपैक है या ट्रांसलूसेंट है। Materials can be grouped on the basis of similarities or differences. कभी भी लाइफ में जब ग्रुपिंग की जाती है उसके बेसिस पर, सिमिलरिटीज़ के बीच में, आप कभी क्या करते हैं इन द हाउस, आप अपने टेबल पर, स्टडी टेबल पर आप यू कैन डू कि ये पेन इसमें रहेगा, एंड देन पेंसिल का एक अलग साइड बना लेते हैं। एंड बुक्स के लिए अलग रख लेते हैं, नोटबुक जिसमें लिखना होता है वो अलग रख लेते हैं। तो ये ग्रुपिंग है एक प्रकार का। द ग्रुपिंग भी आपको कॉपी में जब नोटबुक में लिखते हैं तो एक आपको कॉलम बनाकर ग्रुप करते हैं, जिससे आपको इसका ग्रुपिंग करने का एक ही फ़ायदा है कि आपको कन्वीनियंस होता है, उसका ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड यू कैन यूज़ इट प्रॉपरली। Why do we need to group materials? Why do we need to group materials? हम लोग क्यों करते हैं? In everyday life, we often group materials for our convenience. हम लोग किस लिए करते हैं grouping? अपने convenience के लिए। At home, we usually store things in such a manner. हम लोग घर पर इस manner में रखते हैं that similar objects are placed together, जिससे हमारे को उसको identify कर सके, locate कर सके। Such an arrangement help us to locate them easily. Similarly, a grocer usually keeps all types of biscuits at one corner of his shop and all soaps जो साबुन होते हैं at another, while grains and pulses are stored at some other place. Means कि grains, pulses एक अलग कॉर्नर पे रखा जाता है, अलग जगह पे, soaps अलग जगह पे रखा जाता है, जितने types of soaps होते हैं, and biscuits and other things are kept at another side, जिससे कि आपको easily locate कर सकें। That is a kind of grouping itself. Objects को आप group कर रहे हैं। There is another reason why we find such grouping useful. Dividing materials in a group makes it convenient to study their properties and also observe any patterns in this properties. तो आप एक ग्रुपिंग से एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको कन्विंस होता है कि आपकी इस मटेरियल का जो है इस ग्रुप में रखा है तो इसकी ये प्रॉपर्टीज़ होती है, इस ग्रुप में रखा है तो इसकी ये प्रॉपर्टीज़ होती है, इसके ये गुण है, कोई ट्रांसपेरेंट है तो कोई ट्रांसलूसेंट है, कोई हार्ड है तो कोई सॉफ्ट है, कोई सॉल्युबल है तो कोई इनसॉल्युबल है। तो आप उसका एक ग्रुपिंग अलग करने लग जाते हैं, जिससे आप बाद में उसकी स्टडी ईजिली कर सकते हैं। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन द हायर क्लासेस related to this aspect of grouping, transparency and different properties of material. Let's recap this chapter, and recapping this means I am taking in a small briefing of this chapter what we have done. And here objects around us are made up of large variety of materials. बहुत सारे variety of materials के बने हुए हैं। Like food, हमारे इंडिया में बहुत वैरायटी के हैं। Clothing, fabrics are varieties. The similar objects having a large variety. A given material could be used to make a large number of objects. एक material से large number of objects बना सकते हैं। You think of material like plastic. आप क्या क्या बना सकते हैं? So many kind of what objects you can make. Think of wood. आप you can make lots of different kind of furnitures. Yes or not? Think about what you say that metals. You can make so many things with the help of metal. So a given material could be used to make large number of objects. It is also possible that an object could be made of a single material or of different types of material. आप ये भी देख सकते हैं कि एक चेयर केवल वुड का ही बना हो सकता है, और एक चेयर एक वुड के साथ प्लास्टिक मिलाकर या एक वुड, प्लास्टिक और उसमें स्टील मिलाकर भी बनाया जा सकता है। तो एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड अप ऑफ सिंगल मटेरियल, इट कैन बी मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और आप भी जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सम मटेरियल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस व्हाइल others are not. Then shiny are lustrous and non-shiny are non-lustrous. Some are rough, some are smooth. Similarly, some materials are hard whereas some materials are soft. Some materials are soluble in water whereas some others are insoluble. These are the properties of materials we are talking about in the recap. And some materials such as glass are transparent, and some others such as wood and metals are opaque, and some materials are translucent.
Materials are grouped together on the basis of similarities as well as differences in their properties. Yes, we know that. आप भी जानते होंगे कि यस इसके सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेसिस पे डिफरेंट है तो उसको अलग अलग रखो और सिमिलरिटीज़ है तो उसको एक ही ग्रुप में रखो. सो यस, ग्रुपिंग इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस. जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के होंगे उसमें रखें, एक ग्रुप में डाल दें, जो डिफरेंट है उनको डिफरेंट ग्रुप में. तो मटेरियल्स आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ similarities and differences in their property. Things are grouped together for convenience and to study their properties. कन्वेंस है और उसके स्टडी करने प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए ग्रुपिंग की जाती है.